Assalamu alaikum all of you. This is Noman Mansoor. I am your maths teacher. Yes, beta. Your subject is mathematics and mention is 9 and metric. फर्स्ट थिंग इज डेट 9 क्लास में भी आपकी जो मैथमेटिक्स की क्लासेस इंशाल्लाह होंगी ड्यू टू न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से जो आपकी चीज़ें मेंशन हो रही हैं उसमें अब आपके पास 9 क्लास में भी मैथमेटिक्स की क्लासेस आपकी होंगी। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आप अभी इस टाइम क्लास 9 में इनको स्टडी करेंगे एंड देन इन मैट्रिक क्लास। ओके बेटा, नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर नंबर 1। Chapter number 1. And you already know about in class 6, 7 and 8, first topic of your math book, first chapter, already you know about, this is the sets. आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 6, 7, 8 के अंदर भी आपने इसमें फोकस किया था कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो सेट्स का होता है। सिमिलरली इन क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 1 इज सेट। Okay, beta. Now, first we define what is set. A set is a collection of. A set is a collection of well-defined and distinct object. Distinct object. This is a definition of set. I repeat, a set is a collection of well-defined and distinct objects. Well-defined means, for example, we consider a set A Prime Minister of Pakistan. Prime Minister of Pakistan. This is a well-defined set because you know who is the Prime Minister of Pakistan. And second one example, tasty food items. This is well defined or not? Set B is not considered as a well defined set because टेस्टी फूड आइटम, आपकी टेस्टी फूड आइटम आपके पास जो है ये मैक्सिमम आपके पास में आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये वेल डिफाइंड हो सकता है प्रॉपर सिस्टम में, इसलिए मैं टेस्टी फूड आइटम को नॉट कंसीडर एज अ वेल डिफाइंड सेट, बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज कंसीडर एज अ वेल डिफाइंड सेट। यस बेटा, यू गेट माई पॉइंट। नाउ सेकेंड वन वर्ड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ कंसीडर एग्जाम्पल, distinct object, for example x, any number, and y. For example, x is not equal to y. X is not equal to y. It means x and y are distinct object because x and y is not equal. x और y आपस में इक्वल नहीं है, इस बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि एक दूसरे से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, यानी कि डिफरेंस होगा इनके दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल वी कंसीडर हियर ऑफ फैमिली मेंबर्स। वेरी कॉमन एग्जाम्पल। अगर आप फैमिली मेंबर्स को कंसीडर करते हैं तो मुझे सिर्फ एक बात आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें जिसको यह समझा सकते हैं कि आप मुझे बताएं ये बात कि क्या आपके घर में बिल्कुल लुकिंग वाइज कोई आप जैसा है? नो।
ऐसा नहीं है बिल्कुल। सबके जो है वो बॉडी शेप स्ट्रक्चर रहेंगे, हैंड्स हैं, लेग है, माउथ है, ये सब चीज़ें, ब्रेन है, बट बिल्कुल लुकिंग वाइज बिल्कुल सेम एज इट इज आप जैसा नहीं होगा, सेम लुकिंग वाइज बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह आपके क्लास में भी कोई आप जैसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा ही है। इट्स मीन क्या कह सकते हैं कि आवर फैमिली मेंबर इज कंसीडर एज अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज वेल डिफाइंड and what is distinct object. Distinct object means कि two variables को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं x and y is not equal, तो आपस में इक्वल ना हो, डिफरेंस हो एक दूसरे के अंदर, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से। ठीक है, नाउ we consider an example. The word is A. Set right set denoted by denoted by capital letters A, B, C, and so on, X, Y, and Z. इट्स मीन कि मैक्सिमम हम जब एक्स सेट को डिनोट करते हैं विद यूज कैपिटल लेटर्स ए बी सी एंड सो ऑन एक्स वाई एंड जी, बट एलिमेंट ऑफ सेट elements of set denoted by but elements of set denoted by with small letters, for example A, B, C, and etc. Just better you understand? Set denoted by with capital letters, for example A, B, C, and X, Y, and Z, but elements of set denoted by A, B, C, and is mean with small letters. Now we consider example. So consider example of set A. मैं एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ आपको समझाने के लिए बात को। We consider example set A, write A, B, and C. A symbol of set, यानी कि set A, and A, B, C are called elements of set. A, B, C are called elements of sets. Elements of set. A, B, C जो आपके सेट्स में, बिकॉज इज द सिंबल ऑफ दिस कर्ली ब्रैकेट इज सिंबल ऑफ सेट. This is not a symbol of set. This curly bracket, this is a symbol of set. It means set A is equal to A, B, C. A, B, C are called element of set A. How many elements consider set A? Set A consider three elements. We write elements, number of elements, number of elements in set A. अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए को शो करना है। किस तरीके से आप शो करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज represented by number of elements in set A represented by this symbol N A. This is a symbol. Its mean NA stand for number of element in set A is equal to how many elements in set A? Yeah, three elements A, B, C. Now write three.
Okay, beta. Number of element in set A, it is show denoted by n with bracket A is equal to 3 because A, B, C set A consider 3 elements. Now we consider another example. Notation of set. Another topic, notation of set. How many methods of notation of set, कि कितने मेथड हैं जिससे हम सेट्स को शो कर सकते हैं. फर्स्ट वी कंसीडर tabular form. First name is tabular form and second one is descriptive form. Descriptive form and third one is set builder form. And third one is set builder form. These are three methods. Number one, tabular form. Number two, descriptive form. And third one is set builder form. Now we consider an example. Any example, we consider set A. Is equal to A, B, C. This format of set is called tabular form. ये जो आपके सेट की फॉर्मेशन है इसे आप क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म. दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट ए. टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट ए. Second one is now convert tabular form into descriptive form of set A. Descriptive form में बेटा हमेशा हम सेंटेंस फॉर्मेशन में बात करते हैं. The set of first three alphabets the set of first three alphabet in English. The set of first three alphabets. Okay, English to ABC is also mentioned. The set of first three alphabets. It means the descriptive form is totally depend upon a sentence formation and there is no use of curly bracket. ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम curly bracket use नहीं कर सकते. Why we don't use the curly bracket? Because we use the word of set in sentence formation. जब आप set का word use कर देते हैं already, अब आपको bracket की need नहीं होगी. ठीक है बेटा. First one is tabular form. This is called tabular form, and this one is descriptive form of this set A. Now, third one, set builder form. But before the set builder formation of set A, most important things are there, the symbols of set builder form. सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि set builder form के symbols क्या हैं. First one is such that this one is means belongs to, and this symbol is and this one is or, this one is greater than and equal because of this sign, and other only greater than, and this one is you already know about the symbol of less than, and this one less than and equal because the symbol of this one. It's better. I repeat symbols of set builder form, क्योंकि जब मैं set builder formation आपको जब बनाऊंगा तो उससे पहले इन symbols का होना जरूरी, इसलिए मैंने ये mention यहाँ पे साइड में आपको कर दिए थे. और set builder formation से पहले मैं आपको ये लाजमी समझाना चाह रहा हूँ, तो नोट कर लें अपने पास कि what symbols of set builder formation. These are the symbols of set builder formation. Due to this symbols, we easily convert any set into set builder formation. Better, I recall lecture. First one, the definition of set. A set is a collection of well-defined and distinct objects.
And second main topic is notation of set. There are three methods. Number one, tabular form. Number two, descriptive form. Number three, set builder formation. This is called tabular form and this one is called descriptive form. अभी मैंने आपको सिर्फ दो फॉर्मेशन इसलिए बताई कि अभी सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम सेट बिल्डर फॉर्मेशन से पहले यू इजीली अंडरस्टैंड सिंबल्स ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। इस वजह से मैंने अभी सेट बिल्डर फॉर्मेशन इस टॉपिक की इस एग्जाम्पल की कंसिडर नहीं की है। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।